নমস্কাৰ মই উৎপল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত প্ৰদান কৰা হয় ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট কিন্তু দেশৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ডিগ্ৰীক লৈ যেন কোনোদিনেই বিতৰ্কৰ শেষ নহব ব্যক্তিগৰাকীৰ ডিগ্ৰী প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে ন্যায়ালয়তো প্ৰশ্ন ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিমান পঢ়া তাক লৈ নহয় প্ৰশ্ন ব্যক্তিগৰাকীৰ ডিগ্ৰী কি হেয়া নহয় প্ৰশ্ন ব্যক্তিগৰাকীৰ মাৰ্কশিটত নম্বৰ কিমান হেয়াও নহয় প্ৰশ্ন ব্যক্তিগৰাকীৰ ডিগ্ৰী আসল নে ভুৱা তাক লৈ এবাৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ডিগ্ৰী জানিবলৈ গৈ ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত পৰিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আনকি ব্যক্তিগৰাকীৰ ডিগ্ৰীক লৈ আবেদন কৰি ২৫,০০০ টকাৰ জৰিমনাও ভৰিব লগা হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিমান শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তাক লৈ উত্তাল হৈ আহিছে দেশৰ ৰাজনীতি ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কম পঢ়া-শুনা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰি আহিছে বহু বিৰোধীৰ লগতে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও কিন্তু সেইটোৱে কেৱল মুখ্য প্ৰশ্ন নহয় মূল প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ডিগ্ৰী হসা নে ভুৱা আজিৰ পৰা ৬টা বছৰৰ পূৰ্বেও দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে উত্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডিগ্ৰী সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন তেতিয়া সংবাদমেল যোগে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই দুই নেতাই প্ৰদৰ্শন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডিগ্ৰী कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है दुनिया में देश का नाम जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया किस चीज के किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगे কিন্তু অমিত শাহ আৰু অৰুণ জেটলীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ডিগ্ৰী ভুৱা নেকি এই দুই নেতাই দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তুলি ধৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ডিগ্ৰী হসা বুলি যেন কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই আম আদমি পাৰ্টি অথবা পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শুনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডিগ্ৰী সম্পৰ্কত কি কৈছিল বৰ্তমান কাৰাগাৰত থকা আপ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है सारे मंत्री सारे प्रवक्ता सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई है और मैं इसको फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्री सार्वजनिक की है प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है अभी सिलसिलेवार करके मैं आपके सामने बताऊंगा लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी वो न सांसद बचेंगे न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे नंबर 1 ये वो डिग्री है
जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है, गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। কিন্তু ইমানতে ক্ষান্ত থকা নাই আম আদমি পাৰ্টি। পাৰ্টিৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মোদীৰ ডিগ্ৰী সম্পৰ্কত দ্বাৰস্থ হ'ল ন্যায়ালয়ৰ। কিন্তু গুজৰাট হাইকোৰ্টে খাৰিজ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ডিগ্ৰী প্ৰকাশ সম্পৰ্কে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন। আদালতৰ মত যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিগ্ৰী প্ৰকাশৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বৃহস্পতিবাৰে উভয় পক্ষৰ আইনজীৱীৰ বক্তব্য শুনাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিগ্ৰী প্ৰকাশ কৰাৰ দাবীত গোচৰ তৰাৰ বাবে আনকি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ওপৰতে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিহে 25,000 টকাৰ জৰিমনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ সংশয় প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য কমিছনৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ ভিত্তিতে চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিছনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দপ্তৰৰ পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ডিগ্ৰী প্ৰকাশৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল। একেই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল গুজৰাট আৰু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰকো। কিন্তু গুজৰাট হাইকোৰ্টৰ বিচাৰপতি বীৰেন বৈষ্ণৱৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে খাৰিজ কৰি দিয়ে এই নিৰ্দেশনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি 1978 চনত গুজৰাট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ উত্তীৰ্ণ হয় স্নাতক। তাৰ পাছত 1983 চনত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ অৰ্জন কৰে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী।
সলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাৰ যুক্তি যে এজন ডক্টৰেট আৰু এজন শিক্ষাগত অৰ্হতাহীন ব্যক্তিৰ মাজত গণতন্ত্ৰত কোনো বিভাজন কৰা নহয় এই ক্ষেত্ৰত জড়িত নাই কোনো জনগণৰ স্বাৰ্থ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ দ্বাৰা হস্তক্ষেপ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ব্যক্তি স্বাধীনতাত জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাৰ লগত তেওঁৰ ডিগ্ৰীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কোনো এজন ব্যক্তিৰ শিশুসুলভ কৌতুহলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিগ্ৰী দেখুৱাব নালাগে আনকি তুষাৰ মেহতাই আদালতত এই যুক্তিও আগবঢ়ায় যে আৰটিআইৰ ক্ষেত্ৰত জনস্বাৰ্থৰ বাহিৰে আন একো বিচৰাটো অযুক্তিকৰ বিপৰীতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অধিবক্তা পাৰ্চি কেভিনাই কয় যে এই আবেদন একেবাৰে শিশুসুলভ কৌতুহল নহয় আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণপত্ৰ চাব বিচাৰো মাৰ্কশ্বিট নহয় কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পক্ষৰ এই আবেদন নাৰাখিলে ন্যায়ালয়ৰ উত্তৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিগ্ৰী প্ৰকাশৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই